Today's topic is dysplasia. Dys means abnormal and plasia means growth. So dysplasia का मतलब है abnormal growth. It is the abnormal growth of tissues, loss in uniformity and loss of architectural orientation. अगर सेल्स में कोई एबनॉर्मल ग्रोथ होगी तो ऑब्वियसली वो टिश्यूज के आर्किटेक्चर को अफेक्ट करेगी. इट्स अ फोर रनर ऑफ कैंसर. डिस्प्लेशिया एक इनिशियल स्टेट है और आगे जाकर कैंसर में चेंज हो सकती है. An important point to know is it's reversible if the stimulus is removed. अगर जिस वजह से कैंसर हो रहा है वो स्टिमुलस हटा दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल टोबैको, तो इट्स रिवर्सिबल. ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर में ही चेंज होगी. At the cellular level it is called atypia and at the tissue level it is called dysplasia. सेलुलर लेवल पे ऐसे चेंजेस को एटीपिया कहते हैं और टिश्यू लेवल पे ऐसे चेंजेस को डिस्प्लेशिया कहते हैं. लेट्स लुक एट द फीचर्स. फर्स्ट इज प्लियोमॉर्फिज्म. प्लियोमॉर्फिज्म मीन्स चेंज इन साइज, शेप एंड स्टेनिंग ऑफ सेल्स and their nuclei, and this is the normal cells what you can see. Next is hyperchromatic nuclei. हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियाई स्टेन करने से इस तरीके का दिखाई देता है. नेक्स्ट डिस्प्लास्टिक फीचर इज ड्रॉप शेप ऑफ द रेटिपिग्स. In normal epithelium, it's long and elongated. In dysplasia, it is drop shaped. और इस ड्रॉप शेप के पीछे रीज़न ये है कि जो न्यूक्लियाई होता है उसका क्रोमैटिन मटेरियल इंक्रीज होता रहता है. जेनेटिक मटेरियल एबनॉर्मली इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से प्रेशर मेम्ब्रेन पे प्रेशर आता है और ये एक ड्रॉप शेप्ड अपीयरेंस ले लेता है. Another dysplastic feature is basal cell hyperplasia, where hyper means more than normal and plasia means formation. So there is extra formation of the basal cells. Then we have loss of basal polarity. Moreover, it's not loss, actually it's alteration in the basal polarity. The cells in basal layer proliferates and differentiate into stratum spinosum, then into granulosum, lucidum, and then corneum. But in case of dysplasia, cells have altered polarity and they move randomly in the epithelium. Next dysplastic feature is increase in nuclear cytoplasmic ratio. In dysplasia, size of nucleus increases. जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, ये है नॉर्मल सेल. इसमें न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म का रेशो 1:4 है. दिस इज इंटरमीडिएट एंड दिस इज हाई जिसमें न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म का रेशो 1:1 है. नेक्स्ट फीचर इज इंक्रीज माइटोटिक फिगर्स. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, this one, this, then this. Now what are mitotic figures? These are spindle shaped figure presented during mitosis. The appearance of mitotic figures varies with the stage of mitosis. As you can see in this picture, this is prophase, metaphase, anaphase, telophase and cytokinesis. Here it divides into two daughter cells. So this is a normal process. But in dysplasia, you can have abnormal divisions. You can have 3 daughter cells. This is a slide where you can see this particular cell is in telophase. This is in prophase. And this is in metaphase.
And you can calculate the mitotic index by this formula, where the mitotic index is equal to all the cells in prophase, metaphase, anaphase or telophase, which are divided by total number of cells in the particular slide. Okay, next we have is keratin of a single layer or cell group in the prickle cell layer. So you can see some of the keratinization happening in the prickle cell layer. Then we have irregular epithelial stratification. So what happens is we have seen the layers of epithelium, and in irregular epithelial stratification all those layers are irregularly arranged. ओके, नेक्स्ट इज लॉस ऑफ इंटरसेलुलर एडेशन. जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो सेल्स हैं ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर चुके हैं. ये तब होता है जब सेल्स के बीच में जो डेस्मोसोम्स होते हैं वो नहीं रहते. देन देर इज माइटोटिक फिगर्स इन सुपरफिशियल हाफ ऑफ एपिथेलियम. माइटोटिक फिगर्स नॉर्मली बेसल लेयर में होते हैं, और जब वो सुपरफिशियल लेयर में आपको दिखाई देते हैं, दैट मीन्स देर इज सम इशू एंड इट इज अ फीचर ऑफ dysplasia. This is it for today. Thank you so much for watching, guys. If you have any doubts or any suggestions, please mention that in the comments below.